lot of you people struggle with mugging up trigonometric table. Here we have this little girl and she is playing on this broken tree. This broken part of the tree here measures 170 centimeter. Here, this broken part of the tree is making an angle of 30 degrees. Now can you figure out the height of the original tree? We are going to discuss the concepts that we are going to use to solve this question. Hello students, welcome to the session. So I know a lot of you people struggle with mugging up trigonometric table. So don't you worry, in today's session, not only are we going to discuss the trigonometric ratios of 45 degrees, 30 degrees and 60 degrees, 0 degrees and 90 degrees, but we are also going to see the ultimate trick of mugging up the trigonometric table. So do watch this video till the very end so that you don't miss anything important. And if you love this video, do give us a like and do subscribe to never miss an update from us. With that, let us see this small scenario. So here we have this little girl and she is playing on this broken tree. Okay everyone? Now, can you figure out the original height of this tree? So kuch to additional information honi chahiye, right? So, let's suppose that this broken part of the tree here measures 170 centimeter and here this broken part of the tree is making an angle of 30 degrees with this bottom here. ठीक है? Okay, simple है. Now can you figure out the height of the original tree? You can drop your answers in the comment box below if you know it, and if you don't, then don't you worry, we are going to solve this question in today's session. But before that, we are going to discuss the concepts that we are going to use to solve this question. ठीक है? तो चलिए देखते हैं trigonometric ratios of some specific angles starting with 45 degrees. तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि हम 45 डिग्रीज के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं. ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड वी आर गोइंग टू टेक दिस एंगल एज 45 degrees. And if this angle is 45 degrees, then you know that this angle also will be 45 degrees. कोई शक है ना? That means both these sides will be equal. सबको पता है, right? This is an isosceles right angle triangle. Now we are going to suppose that this side measures A here and this side also measures A. Now, by using Pythagoras theorem, you can figure out that this hypotenuse here measures A root 2. Okay, ठीक है? तो चलिए, इस वाले angle के लिए we are going to figure out trigonometric ratios. ठीक है? Let's start with sine 45 degrees. Okay, तो we know that sine theta is equals to opposite over hypotenuse. ठीक है? ओके, तो अब इस एंगल के लिए ये ऑपोजिट है, राइट? ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेन्यूज है. ओके एवरीवन, सो हियर ऑपोजिट मेजर्स ए एंड हाइपोटेन्यूज मेजर्स ए रूट 2. सो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin 45 degree will come out to be 1 by root 2. Similarly, you can figure out cos 45 degrees. Cos 45 degrees would be what? It would be adjacent over hypotenuse. Adjacent also measures A and hypotenuse measures A root 2. So ultimately cos 45 degree will also come out to be 1 over root 2. ठीक है? चलिए, अब we know sin 45 degree is 1 by root 2. So cosec 45 degree कितना होगा? root 2. Similarly अगर cos 45 degree भी 1 over root 2 है तो sec 45 degrees कितना होगा? root 2 होगा because they both are reciprocals of each other, right? Now, what will be tan 45 degrees? So tan 45 degrees is actually going to be opposite over adjacent, and opposite and adjacent they both are equal to A, right? So tan 45 degree will become what? 1, and hence cot 45 degree will also be what? It will be also be 1, ठीक है? Because they both are reciprocals of each other. ठीक है? तो I hope now you understand how we get the trigonometric ratios of 45 degrees. Now let us quickly see how do we get trigonometric ratios of 30 degrees and 60 degrees. ठीक है? तो इसके लिए what we have done is we have taken this equilateral triangle here. Okay? So let me name this equilateral triangle as ABC. सबको पता है equilateral triangle क्या होता है, right? All three angles are 60 degrees and all three sides are equal. ठीक है? अब what we have done is we have drawn this AD here which is actually bisecting the angle BAC. That means that this angle here would be 30 degree
and this angle here will also be 30 degrees. ठीक है, अच्छा अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस देखना है ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD. अब ध्यान से देखो और सोचो कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय व्हाट क्राइटेरिया आर दे कॉन्ग्रुएंट, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो. ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूं. ओके, सो दीज टू ट्राइंगल्स आर एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD. And if they are congruent, everyone, then this angle here and this angle here, they both will be equal, right? Because corresponding parts of congruent triangles are equal. And since BC is a straight line and these two angles are equal, that means that both these angles will actually be equal to 90 degrees. Linear pair का concept, right? ठीक है, तो अब हमारे पास ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आ चुके हैं, राइट? ओके एवरीवन, नाउ लेट अस सपोज दैट दिस साइड AB is A, so this side AC will also be A and this entire BC will also be A units. ठीक है, अब BD और DC इक्वल होंगे, अगेन CPCT. ठीक है, सो BD और DC अगर इक्वल होंगे तो दोनों का मेजर A/2 ईच होगा, राइट? अच्छा जी, अब क्या आप ED की वैल्यू फिगर आउट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ ए? बिल्कुल कर सकते हैं. इन ट्राइंगल ABD वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम, राइट? एंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट AD विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, है ना? ये तो सिंपल है. तो AB स्क्वायर इज A स्क्वायर एंड BD स्क्वायर इज A/2 होल स्क्वायर. ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लोगे. सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा A√3/2. ठीक है, ओके. तो चलिए, अब अगर आपको AD की भी वैल्यू पता चल गई है तो आप इस एंगल के लिए साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक सबकी वैल्यू निकाल लोगे. चलो मैं एक दो की निकाल के दिखा देती हूँ. ठीक है, चलिए देखते हैं cos 60 डिग्री की वैल्यू यहां पर. ठीक है, तो cos 60 डिग्री क्या होगा? cos 60 degree होता है adjacent over hypotenuse. Now for this angle, the adjacent here is BD, right everyone? ठीक है, okay. And what is the hypotenuse? The hypotenuse is already defined. It is AB here. So cos 60 degree will be what? It will be BD, that is A/2 over AB, which is A. And A will get cancelled and will have half, right? Similarly, you can also figure out the values of different trigonometric ratios for the angle 30 degrees. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल 30 डिग्री देखो, इस 30 डिग्री के लिए हमारा एडजेसेंट तो ये होगा, AD होगा, ऑपोजिट हमारा DC होगा. ठीक है, तो इस 30 डिग्री के लिए हम साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू अगर निकालें तो क्या होगा? साइन 30 डिग्री होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट क्या है? DC है, राइट, विच इज A/2 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है? A, राइट? So we get the answer as half. ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है through which you can figure out the different trigonometric ratios of 30 degrees and 60 degrees. तो बाकी के trigonometric ratios you can figure out yourself. With that we are going to move to trigonometric ratios of 0 degree and 90 degree. ठीक है, अच्छा यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम मान लेंगे कि हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है ABC. ठीक है, और ये हमारा है थीटा. ठीक है, so what we are going to do is we are going to try making this theta here 0. ठीक है, तो जैसे जैसे थीटा 0 की तरफ बढ़ेगा, this side here which was originally AB, it will keep getting smaller and smaller and smaller or shorter and shorter and shorter, right? और एक टाइम आएगा जब AB क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और AB कब 0 होगा? जब थीटा 0 हो जाएगा. जब थीटा 0 डिग्रीज हो जाएगा तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, राइट? तो इस थीटा के लिए जो हमने लिया है 0 डिग्रीज, जो ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट क्या होगा? AB होगा, राइट? तो ऑपोजिट की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट? अच्छा, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का क्या होगा? तो आप देखना कि जैसे जैसे थीटा 0 होगा, अल्टीमेटली क्या होगा? ये जो एडजेसेंट है और जो हाइपोटेन्यूज है, जो एडजेसेंट है और जो हाइपोटेन्यूज है, वो
मिल जाएंगे, राइट, एंड दैट मीन्स दे विल बिकम इक्वल टू ईच अदर. सो विल से दैट एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज विल बिकम इक्वल. Right, everyone? Now, from here, you can easily see that sine 0 degrees will be what? It will be opposite over hypotenuse, and since opposite has become 0, तो बात ही खत्म हो गई. Sine 0 degrees भी 0 ही हो जाएगा, right? But what will happen with cos 0 degrees? So, हमें पता है कि एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो चुके हैं, राइट, एंड सिंस दे हैव बिकम इक्वल, cos 0 डिग्री विल बिकम 1. बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो आप, राइट. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन फिगर आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 90 डिग्रीज. अब उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है, तो सोचो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ठीक है. और फिलहाल के लिए इसका एक दूसरा नाम भी रख देते हैं, इजी सा, घर का नाम अल्फा, राइट. ओके, तो अब ये सोचो कि जब थीटा 0 डिग्रीज हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्रीज माइनस 0 डिग्रीज विच विल बी 90 डिग्रीज, राइट. सो थीटा 0 होने पर हमारा अल्फा 90 डिग्रीज का हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, अब अल्फा के लिए ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज देखते हैं क्या हो जाएंगे, ठीक है. तो अल्फा के लिए फिलहाल सी बी ऑपोजिट है, ठीक है, ए बी एडजेसेंट है और AC हाइपोटेन्यूज है, ठीक है. अब जब अल्फा 90 डिग्रीज हो जाएगा, मतलब जब थीटा 0 डिग्रीज हो जाएगा, तब क्या होगा कि हमारा जो ऑपोजिट है और जो हाइपोटेन्यूज है अल्फा के लिए, ठीक है, फॉर अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, जो ऑपोजिट है और जो हाइपोटेन्यूज है वो एक हो जाएंगे, राइट. That means they will become equal, while the adjacent for alpha will become equals to 0. और यहाँ से आप sin 90 डिग्रीज और cos 90 डिग्रीज की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, राइट. आप यहीं से देख सकते हो कि sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, because opposite over hypotenuse becomes 1, and cos 90 डिग्रीज की वैल्यू 0 होगी, because adjacent 0 हो चुका है, ठीक है. बाकी सब आप अपने आप निकाल लेंगे, आई एम श्योर, ठीक है. सो चलिए जी, अब तक तो हमने देखा कि डिफरेंट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है. अब एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि वी कैन फिगर इट आउट लाइक दिस, राइट. सो वील हैव टू मग इट अप, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द अल्टीमेट ट्रिक ऑफ मगिंग अप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, राइट. सो चलिए जी, शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो हम साइन थीटा की वैल्यूज देखते हैं फॉर डिफरेंट एंगल्स, राइट. Okay, so what I'm going to do here is below 0 degrees I'm going to write under root of 0 over 4. Below 30 degrees I'm going to write under root of 1 over 4. Below 45 degrees I'm going to write under root of 2 over 4. Below 60 degrees I'm going to write under root of 3 over 4. And below 90 degrees I'm going to write under root of 4 over 4. पैटर्न दिखा सबको? पैटर्न है, राइट. बस आपको इतना याद करना है, बस खत्म बात. Now all you need to do is simplify. So here under root of 0 over 4 will give you 0. Under root of 1 over 4 will give you 1 by 2. Under root of 2 over 4 will give you 1 over root 2. Under root of 3 by 4 will give you under root of 3 over 2. And finally under root of 4 over 4 will give you 1. आ गया साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर डिफरेंट एंगल्स here, right? अब what will you do for cos theta? Now for cos theta you will write these same values but in reverse order, okay. So starting from 1, start copying down the values here. So 1, then we have root 3 over 2, then we have 1 over root 2, then we have 1 by 2, and then finally we have 0. ठीक है. Now for tan theta what you are going to do? It's very simple. Tan theta is sin theta over cos theta, right? So you can just divide. So 0 over 1 will give you 0. 1 by 2 over root 3 by 2 will give you 1 over root 3. 1 over root 2 over 1 over root 2 will give you 1. Root 3 over 2 over 1 by 2 would give you root 3. And finally 1 over 0 क्या होता है? Not defined, right? So this is not defined. Okay, everyone. Now next up, cosec theta. So cosec theta is the reciprocal of sin theta. So all you need to do is just take the reciprocal of these values here. Now the reciprocal of 0 does not exist. Not defined. Okay, reciprocal of 1 by 2 is 2. Reciprocal of 1 by root 2 is root 2. Reciprocal of root 3 by 2 is 2 over root 3. And reciprocal of 1 is 1.
Simple. Finally, what will be the values of sec theta? Sec theta is the reciprocal of cos theta. So you have to take the reciprocal of the values of cos theta for different angles, right? So reciprocal of 1 is 1. Reciprocal of root 3 by 2 is 2 over root 3. Reciprocal of 1 by root 2 is root 2. Reciprocal of 1 by 2 is 2. Reciprocal of 0 is not defined. Okay, for cot theta, you can take the reciprocals of tan theta, right, for different angles. So reciprocal of 0 does not exist, so not defined. Reciprocal of 1 by root 3 is root 3. Reciprocal of 1 is 1. Reciprocal of root 3 is 1 over root 3. And finally, reciprocal of not defined. ये तो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई. क्या होगा, right? So don't you worry. Don't think that reciprocal of not defined is not defined. Think that cot theta is actually cos theta over sin theta, right? So cos theta over sin theta, that is 0 over 1. And 0 over 1 is what? 0. And that's how you mug up a trigonometric table. I hope you will use this trick in your board exams. Okay? So now let us try solving that one question we saw in the beginning of the session. Okay, so in this question, what we are going to do is, first of all, obviously, let's name this triangle ABC. Now, what do we need to figure out? We need to figure out the value of AB plus AC. Okay. Now, we know the value of AB already. It's 170 centimeters. We need to figure out the value of AC. ठीक है? चलिए जी. अब, let's say that this 30 degree here is our theta for now. So, for this 30 degrees, what will be the opposite, what will be the adjacent, and what will be the hypotenuse? Let's see. Okay. So, opposite would be this, adjacent would be this, and hypotenuse would be this. ठीक है? Okay. Now, we know that sine theta is equals to opposite over hypotenuse, right? So, from here we can say that sine 30 degrees will be equal to AB over AC. Right, everyone? Now, what is the value of sine 30 degrees? Sine 30 degrees is equals to 1 over 2. Right? And AB is given to us as 170 centimeters, and AC we have to figure out. So, AC from here will be equal to 2 into 170, which will be equals to 340 centimeters. Okay? So, pretty easily we figured out what AC is using trigonometric ratios of 30 degrees. Now, we have to figure out AB plus AC. So, AB plus AC will be equal to 170 plus 340. That would be 510 centimeters. Right? Now, how did I figure out which trigonometric ratio to use? See, you can use any trigonometric ratios here. Your agenda should be to figure out the values of the sides of the triangle. Once you figure that out, आप easily अपना answer निकाल लोगे, right? I just thought that the shortest way possible was to directly figure out the value which we need, है ना? So with that, that's it for today. If you loved our hard work, then do give us a like and do subscribe to never miss an update from us. Thank you.